Everyone, welcome to my channel UPSC Educare. We are starting with international relation, which is important part of 3. Every year, 3 to 4 questions are asked in mains, and it is also very important from prelims perspective. So, in this video series, we will try to understand these topics in a very lucid and simplified way, and we'll look how it is important from mains perspective and prelims perspective. So, let us start. So the first topic is about Quad, which is a regional grouping. And if we see, so regional groupings are asked in mains and also important in prelims about who are the members or specific agendas or any agreement which happens. So recently, Prime Minister attended the Quad Leader Summit, which happened in Wilmington, US. So let us look why it is important. Also, recently, our External Affairs Minister has said that India and US ties, and especially the Quad, so they have long way to go, and we will have increasing engagement. So this specifies that the significance of Quad that it holds for India and as well as for the global politics. So what is Quad in a simple way? It is the grouping of 4 countries. As we can see here, we have India, we have Japan, we have Australia, and we have USA. So this is Indian Ocean and this is Pacific Ocean. So it is basically a Indo-Pacific Ocean quadrilateral grouping, right? And in mains always include such maps, which is a very simple map. You can always draw a quad, and in form of a schematic diagram you can represent these stats. Like it comprises 24% of the world population. Very simple to remember. India comprises 18% of the world population, so obviously it has to be more than 22%, right? And 35% of the world GDP and 18% of the global trade. Now, let us first understand what is Quad, then we will come to this summit. So, it is a plurilateral framework. Why plurilateral? Bilateral is between 2 countries, multilateral among multiple countries like United Nations, and plurilateral more than 2 countries. Okay? Framework of maritime democracy. Maritime democracy, why? As I as we can see here, that India has Indian Ocean. Every country has coastline. So we have Indian Ocean and Pacific Ocean here, and all our democracies they have same rule-based order. So maritime democracy and a global force for good. Why global force for good? Because all are working to improve the world order to make a rule-based order, right? So it is very important that we add such keywords in our answers, which delivers real positive and enduring impact for the Indo-Pacific. Now, who are members? So, as I told you, Australia, India, Japan, and US. Okay, and this is important from prelims perspective that sometimes it may be asked who are the members in one statement. Now, the important is it is not a military alliance nor a mutual defense agreement. मतलब कि there is no defense pact like in NATO. There is an agreement that if or there is attack on one country, other nations will come to protect that. But Quad में ऐसा नहीं है. It is not a military alliance. Why it is not so, or is it good for India or not? We'll look later. Now, what is the purpose? To support an open, stable, and prosperous Indo-Pacific. So, always we can start अगर quad track है, so we can start with this introduction also. Inclusive and resilient. Now, summit कौन सी होती है? एक leader summit होती है. Leader summit मतलब जैसे जो head of the state है. For example, in India, it is Prime Minister, and for US it is president, and a foreign affairs ministers meeting like from India जय शंकर जी. ठीक है, on annually ये meeting होती है. But mind it, there is no secretariat or permanent charter. Now there is no specific charter as I told you, but 6 working groups are there where the work has been divided. So these are very generic like health, climate, critical and emerging technologies like quantum technology, then we have space, infrastructure, and cyber security. I hope this much is clear about Quad.
नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड? तो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी कोई रीजनल ग्रुपिंग या कोई भी कंट्री की सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करते हैं या कॉपरेशन की बात करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट जियो स्ट्रेटेजिक, विच इज कि फ्यूचर में कहाँ हम इंगेजमेंट कर सकते हैं फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, देन फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल कनेक्शन या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में हम कैसे कॉपरेट कर सकते हैं, एंड अदर डोमेन्स में वी कैन टॉक अबाउट सोशल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट। तो अगर हम ग्लोबल सिग्निफिकेंस देखें, so you can identify one thing in this, that all the countries Indo-Pacific, and we are not using Asia-Pacific here. Why? To de-emphasize the role of China, because Asian economy में the emerging largest economy is China, but here we are talking about Indo-Pacific, where we are emphasizing on India as a country, right? So it means that all have a one common thread, that is China we are talking about here. Why? Because for USA, USA wants to maintain its hegemony in the global world order. India, we have the territorial disputes, we have the economic dependency on China. Australia and Japan also, they face similar threats in their maritime protection, right? So first is to for strategic balancing, to counterbalance the China's growing influence, especially in the Indo-Pacific region. Then maritime security for the open, inclusive Indo-Pacific region. We know that China has many policies like the string of pearls policy, which India counteracts with the diamond necklace policy. Also, China has something about 9-dash line, which maintain it's in this region, which is the South China Sea region, right? So यहाँ पे it harasses Vietnam or Philippines with its 9-dash line. So we want to maintain कि China here the countries follow UN clause, which is the United Nations Convention on the Law of the Seas, ठीक है? And then economic collaboration, infrastructure development, which is part of one of the working group, right? Health and humanitarian, तो health भी एक working group का एक sector है. क्वाड में भी it played a pivotal role कोविड में, ठीक है, वैक्सीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल था, डिजास्टर रिस्पॉन्स HADR प्रोवाइड करना. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड स्पेशली फॉर इंडिया? तो यही पॉइंट्स को हम इंडिया के रेलेवेंस में अगर देखेंगे तो फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग अगेंस्ट चाइना. तो ये भी हमने समझा कि इट विल रिड्यूस द थ्रेट ऑफ चाइनीज एनसर्कलमेंट, दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ pearls policy. Then Act East policy. So we know India first had something known as Look East policy, but under Modi government in 2014 we upgraded it to Act East policy, under which we are engaging more with the South Asian and East Asian economies. So Japan comes under this policy, East Asia and Southeast Asia. Then military capability, so bilateral defense and security partnership, we know Malabar exercise, and with Malabar exercise only Quad took its form, present form. And then we have technological and economic cooperation, supply chain resilience initiative, we enjoy such one with Japan and Australia, right? And to reduce the dependency on China for key import, we know that we are very much dependent on China for import like the API, which forms the basis of our pharma industry. And this becomes important for Atmanirbhar Bharat initiative, because we have seen in COVID how the global supply chains were disrupted, right? Then what are the initiatives of Quad? So we have Quad Fellowship. या आप हमेशा मेंस में ऐड कर सकते हो for the enrichment of the answer. So there is masters and doctoral programs है. फिर Quad का climate change adaptation and mitigation पैकेज है, चैम्प है. देन डेप्थ मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल है, एंड केबल कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस की पार्टनरशिप है. देन देयर मस्ट बी सर्टेन चैलेंजेस. सो जब क्रिटिकली एनालिसिस के लिए आता है, चैलेंजेस को ऐड करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट विच आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, फॉर्मल चार्टर नहीं है, ठीक है, सेमी रेगुलर समिट होते हैं. एंड फिर परसीव्ड एज कोल्ड वॉर मेंटालिटी. तो चाइना उसको जो क्वाड को एशियन नाटो की तरह ट्रीट करता है, या रिफ्लेक्टिव ऑफ कोल्ड वॉर मेंटालिटी कि देयर इज नाउ चाइना वर्सेस यूएसए और चाइना वर्सेस वेस्ट. तो एक कोल्ड वॉर मेंटालिटी की तरह से परसीव किया जाता है. देन डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट. तो अभी भी एक कॉमन ग्राउंड नहीं है जहाँ पे सब लोग
अग्री करते हैं। यूएसए के अलग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, ठीक है, एंड इंडिया फोकसेस मेनली ऑन रीजनल सिक्योरिटी रिगार्डिंग चाइना, ठीक है। एंड देन यूनिक कैरेक्टर, सो वी नो कि एशियन है, आयोरा है, और फिर अभी ऑकस है। तो ये सारे जो अलग अलग ग्रुपिंग फॉर्म हो रहे हैं, समवेयर दे आर अंडरमाइनिंग द क्वाड इम्पोर्टेंस. Then US is distracted, so it is again reinventing its focus on more on Europe, Middle East, ठीक है, because of Israel, Palestine, Russia, Ukraine war. Then India के क्या concerns हैं? So reluctance towards military alliance. So this is one of our dogma, one of our policy that we do not want to engage in military alliance. For example, recently we have seen in the Canada issue. So USA, it supported Canada in this Niger killing and this whole scenario. So this shows that we cannot rely very much on USA, right? We have to maintain a strategic balance between Russia, China, and USA. That is known as strategic balancing. And for that, we never join military alliances because it may anger Russia or it may anguish China, right? So we refrain from it, we maintain our strategic autonomy, and we do not want that Quad becomes a military alliance. So non-traditional security cooperation. Then policy of reactivating tensions with China. As I said, that too much engagement with Russia can, with USA, can eliminate Russia, also can anguish China. We always see that there is a reaction from China whenever there is Quad summit. Then other groups like Squad, which is of Australia, Japan, Philippines, US. So this can also come in films in one marker or one statement. What is Squad? So Australia, Japan, Philippines, and US. So they are also taking away the focus. India's flexible approach. So we want that we are also balancing it with SEO, BRICS, and other groups. Then impact on other partners. So risk eliminating important Indian partners like Russia and Iran that I already explained. Now what can be the way forward? So challenges को ही पहले हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, चार्टर होना चाहिए, जैसे अभी हमने बिम्स्टेक का बनाया, ऑगमेंट द एक्सिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, engage with other players. We need to balance the clarity and ambiguity, confrontation, minimize the risk of direct confrontation. The one major risk is that we are the only Quad country which shares the territorial border with China. So if anything occurs, we are not sure whether these countries will come to protect us or not if something happens. So we need to keep our interest at foremost, right? Also, there is something which is called Principle for Digital Public Infrastructure. So you must be knowing what is DPI. So G20 में अभी हमने बहुत ज़्यादा फोकस करा था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में. सो बेसिकली इन वन लाइन इट इज़ अ इंडियन स्टैक जहाँ पे वी ट्राई टू गेट दी पब्लिक सर्विसेज थ्रू द डिजिटल मीडियम. इसमें मेनली 3 मेजर लेयर्स आती हैं. एक इंफॉर्मेशन और डेटा लेयर होती है जिसमें हमारा डिजिटल लॉकर आता है, पेमेंट लेयर होती है जिसमें हमारा यूपीआई आता है, right? So to transform the society's sustainable development, so to deliver the economic opportunities and social services, and it's a like a digital infrastructure, right? की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या आप एक हब एंड स्पोक मॉडल में कभी बनाना चाहो, या ऐसे मॉडल में कभी एक एडिशन के लिए आप इंक्लूड कर सकते हो. इंक्लूसिविटी रहती है, कोलैबोरेशन करना, यूजर सेंट्रिक सॉल्यूशंस होना चाहिए, सस्टेन अडॉप्शन होना चाहिए, मॉड्यूलरिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी. आप अकोमोडेट कर पाओ, चेंजेस को मॉडिफाई कर पाओ, जिसे हम अजाइल अप्रोच कहते हैं. स्केलेबल होना चाहिए, इंक्रीज इन डिमांड के अकॉर्डिंग. सस्टेनेबल होना चाहिए, फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है. Then other principles are respect for human rights, privacy, transferability और ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. और कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं डीपीआई के लिए, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, गेट्स फाउंडेशन, जो एक स्पेशलाइज प्रोग्राम्स हैं. फिर वन फ्यूचर लाइन्स है, ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है. वॉलंटरी एम्ड एट बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPI low and middle income, जो साउथ साउथ कॉपरेशन पे भी इंडिया इज वेरी मच फोकसिंग अपॉन. देन ग्लोबल DPI रिपोजिटरी, ये तो इंडिया ने ही लॉन्च किया है, रोल्ड आउट बाय इंडिया. तो एक पोर्टल है ग्लोबल DPI रिपोजिटरी. और एक सोशल इम्पैक्ट फंड है
फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन दी ग्लोबल साउथ नेशंस। ठीक है, तो सोशल इम्पैक्ट फंड हो गया, ग्लोबल डीपीआई हो गया, वन फ्यूचर लाइन्स एंड international organizations like World Bank, so they have specialized programs for it. Now we are coming to the main topic, which is why this quad is in news, जो अभी समिट हुई थी इन विलमिंगटन इन यूएसए एंड ये जो है 20 years मार्क करता है, so it becomes significant from for the UPSC next year. एंड विलमिंगटन डिक्लेरेशन साइन हुआ था, तो डिक्लेरेशन जहाँ समिट हुआ होता है उसी प्लेस के नाम पे होता है, और जो नेक्स्ट समिट होगा वो 2025 का इंडिया में होगा, सो इट अगेन बिकम इम्पोर्टेंट फॉर 2025। ये लास्ट 4 years 6 टाइम से हो चुका है। नाउ अनाउंसमेंट क्या हुए थे विलमिंगटन डिक्लेरेशन में, सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। पहला है, जैसे हमने देखा था एक वर्किंग ग्रुप है हेल्थ पे, तो हेल्थ सिक्योरिटी पे फोकस करते हुए क्वाड कैंसर मूनशॉट है। नाउ मूनशॉट पे हम फोकस कर सकते हैं कि सम टाइप ऑफ वैक्सीन और समथिंग कैंसर के लिए, तो किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स, यू मस्ट बी नोइंग कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्यों न्यूज में है। सो वी नो कि वैक्सीन डेवलप की गई है सर्वाइकल कैंसर, इट इज कैंसर विच हैपेंस इन वुमेन, सो जो वजाना है या सर्विक्स होता है वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होता है, एंड इट इज स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली, एंड सर्वैक एक वैक्सीन है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, इट इज मेड बाय मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो और ये किस फायदे से होता है, यू शुड नो। ठीक है, तो HPV है, तो रीड अबाउट इट, ये इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से। फिर सेकेंड जो हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वी हैव क्वाड पोर्ट ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, है ना, फॉर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देन थर्ड जो पिलर था क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो सेमीकंडक्टर इट इज इन फ्यूचर, इट इज बेस्ड फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, राइट। तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कॉन्टिजेंसी नेटवर्क, जस्ट थिंक अबाउट कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं या मेजर शेयर है, तो इट इज ताइवान। एंड वी नो चाइना और ताइवान का फ्यूचर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, right, so develop these linkages. Then quad investor network है to promote the supply chain resilience and joint research. Then climate and clean energy, again climate is one of the working plan, so boost energy efficiency, affordable cooling system. फिर space, तो स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल है फॉर मॉरिशियस, तो इंडिया ने स्टैब्लिश करा है इसको। देन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए वी हैव मैत्री, तो मैत्री इज इम्पोर्टेंट है, सो मैत्री इनिशिएटिव। ठीक है, सो मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन दी इंडो पैसिफिक, टू मैक्सिमाइज टूल थ्रू इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। डोमेन अवेयरनेस, व्हाट इज डोमेन अवेयरनेस, तो सैटेलाइट्स के थ्रू, रिमोट सेंसिंग के थ्रू यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड शेयर इट विथ ईच अदर, राइट। And then we have Quad at Sea Ship Observer Mission 2025 to improve the interoperability and advance maritime safety, so that the information is exchangeable and applicable at different platforms. So Quad at Sea Ship Observer Mission है, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। सो वी हैव हेल्थ सिक्योरिटी के लिए क्वाड कैंसर मूनशॉट फॉर सर्वाइकल कैंसर। दैन पोर्ट्स के लिए पार्टनरशिप है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव है, क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क है। क्लीन एनर्जी के लिए वी आर फोकसिंग ऑन एनर्जी एफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम। स्पेस के लिए वी हैव अ स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल फॉर मॉरिशस टू सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन साइंस, space based monitoring for weather and climate impact. And then for maritime security we have Maitri initiative, which is training in the Indo-Pacific maritime domain awareness के लिए, and Quad at Sea Ship Observer mission है for 2025. So I hope this is clear. What is Quad? What are the objectives? What are the issues? Significance for India? We learned about the recent Wilmington summit. ठीक है, and what are the major initiatives. We also learned about how Quad is working for digital public infrastructure, and I told you about कि prelims के लिए कहाँ कहाँ important है। Mains के लिए simple question can come like Quad is the new reality of the modern world, so discuss its significance and challenges। ठीक है, तो आप उस लाइन पे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट कि क्वाड क्या है, या करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हो कि यू कैन टॉक अबाउट कि अभी 20 years हो गए हैं, एंड 2004 में बना था आफ्टर दी जो सुनामी आया था इन दी इंडियन ओशन, एंड देन मालाबार एक्सरसाइज
say how it developed, you know. So we can start with the current affair, and then we can draw a map showing the quad countries, and एक डायग्राम में हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि it represents 24% of world population, 35% of the GDP, 18% of the global trade. ये दो चीज आप मेंशन कर ही सकते हो, ट्रेड एंड GDP and population. And then you can talk about how it is a new reality of the modern world. So what is the significant it holds for the nation, for India, and new reality hai. So how it is adjusting with the existing world order, what is the new world order we can talk about. And then अगर critical analysis होता है तो हम challenges बता सकते हैं, और you can simply go कि way forward क्या हो सकता है ना. एंड हाउ दिस रीसेंट जो विल्मिंगटन समिट है, इट इज रिफ्लेक्टिंग दिस न्यू रियलिटी. तो हम उस चीज को भी बता सकते हैं कि इट इज फाइटिंग फॉर कैंसर, फॉर दी पोर्स, फॉर दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, फॉर क्लाइमेट, क्लीन एनर्जी, स्पेस सेक्टर, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ऑल. एंड देन यू कैन कंक्लूड आइदर विद द स्टेटमेंट ऑफ जयशंकर जी जो उन्होंने अभी रिसेंटली बोला था ऑन क्वाड, और विद एनी अदर quote you remember, simply you can conclude it. So I hope this was useful. Now let us move to the next topic.